Once upon a time, a Soviet war helicopter entered Allied territory. The aircraft was intercepted and shot down. As the pilot emerged from the wreckage, he was arrested by the same bastards who shot him down, and later was brought to a military base for interrogation. That pilot was me. Name? My name is Fox. Jesse Fox. You don't seem to be Russian. Russian? Me? You were piloting a Russian aircraft 2 hours ago. I also drive a Toyota, and I'm not Japanese. All right, Mr. Fox. Before arresting you, I'm obligated to write down a report with your version of the facts. So tell us what the hell you were doing in that heavily armed Soviet helicopter. It's a long story. Sergeant, bring us some coffee. Yes, sir. Wachowski, bring the lieutenant some coffee. Yes, sir. Well, Mr. Fox, we have plenty of time. Explain what happened. In 1972, a crack commando unit threw me in a prison for a crime I didn't commit. You're under arrest for a crime you didn't commit. I promptly escaped from a maximum security stockade to the underground, trying to survive from these soldiers of fortune. Let's start from the beginning. How did you escape from that cell? Piece of cake. I just had to write a note. A note? Where'd you get the paper from? I used toilet paper. I see. And how did you find a pen? A pen? I was in a dirty, grimy cell, not in an office. I wrote the note with a rusty wire, using my own blood as ink. सो कैसे हो दोस्तों, मैं ओल्ड शार्क गेमिंग में आपके लिए लाया हूं बहुत ही बढ़िया गेम जो कि है अनमेटल एंड ये बेसिकली बहुत ही अच्छा गेम है। मेरे बहुत ही फनी लग रहा है इसका डायलॉग्स एंड इसका जो अप्रोच है इस गेम का, आप देखो। एंड ये बेसिकली एक हेल्दी डोज ऑफ ह्यूमर और सटायर से बना हुआ है ये गेम। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इस गेम के बारे में। I scratched my arm with the wire and got to work. It wasn't easy. The toilet paper tore under the pressure of the bloody wire. Those bastards gave us cheap paper, one ply, unscented, and unpatterned. Why did you break the toilet? Why not grab the paper like a normal person? You know how prison is. It's kill or be killed. And I wasn't going to be killed by some dirty toilet. Hey, you moron! Holy Jesus. You schmuck. Do you really think I'd be stupid enough to kill myself? Kill myself? Ugh. I left the guard locked in the cell. Then I threw away the key and got out of there. Mr. Fox, what about the noose? Where did you get that from? Where did I get the noose? Are you seriously asking me that? I am, Mr. Fox. I'll tell you later. When leaving the cell, I found myself in a prison yard surrounded by some buildings. There were piles of boxes and other stuff here and there. And the ground was plain dirt. Oh, and it was night. सो गाइज मैं ये गेम के बीच में मैं नहीं आना चाहता बिकॉज ये बहुत ही यूनिक सा गेम है जो आपके लिए सही होगा अगर डायलॉग्स या अगर 2D प्लेटफॉर्मर गेम पसंद है एंड आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल भी गेम पसंद है तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखो मैं अभी बॉक्स तोड़ रहा हूँ, इस बॉक्स में भी कुछ आइटम्स रहते हैं तो आप देख लीजिए, That box contained some filthy cloth scraps. I made some handy bandages to prepare for when I would get wounded. Bad news, dirty cloth rags don't heal you. They just stop the bleeding, and I ain't got time to bleed. Good news, I could reuse these rags as much as I wanted. Good dirty cloth is hard to come by.
सो जेसी फॉक्स आपको खुद ही बोल दे रहा है कि इस गेम का जो मेन मोटिव है, तो देखिए क्या हो रहा है आगे। जेसी फॉक्स क्या करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। I thought everyone would be asleep at night, that it was safe to escape. I was dead wrong. I noticed the presence of. सो ये चूजिंग ऑप्शन आपको दे देगा, आपको किसी एक को चूज करना है One guard on the night और उसके shift. हिसाब से ये आपको देगा क्वेस्ट। सो दोस्तों ये अनमेटल है एंड ये एक 2D स्टेल्थ एक्शन एडवेंचर गेम है जो एक क्लासिक ओल्ड स्कूल पिक्सेलेटेड ग्राफिक्स से बना हुआ है। एंड आई डोंट नो कौन सी गेम इंजन से ये बना हुआ है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि ये यूनिटी से ही बना हो, बिकॉज यूनिटी में इंडी गेम्स बहुत ही अच्छा बनता है। इन टर्म्स ऑफ अनरियल में आपको ट्रिपल ए गेम्स ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एंड सो आई होप ये यूनिटी में बना हो। सो बेसिकली इस गेम का जो प्रोटैगनिस्ट है जेसी फॉक्स, जो कि एक कमांडो तो नहीं है मुझे लग रहा है, मुझे उतना भी नहीं पता, लेकिन ये अरेस्ट हुआ था कोई बिना क्राइम करके। मतलब इसको यहाँ पे भी कि उसका कोई क्राइम तो नहीं किया, लेकिन उसको फिर भी अंदर ले लिया। लेकिन हम लोग को टोटली नहीं पता कि एक्चुअली स्टोरी क्या है इस गेम का, बिकॉज ये शायद एक ट्यूटोरियल मिशन होगा। बेसिकली एवरी डेमो एक ट्यूटोरियल मिशन ही देता है आपको, नहीं तो आपको बीच में से कोई एक मिशन दे देता है। तो मुझे लग रहा है ये जेसी फॉक्स एक इन प्रिजन में मिला एंड ये अपना कहानी बता रहा है उस बंदे को कि उसने कैसे ये जेल तोड़ा था अभी। तो आप देखो। Hey, over here. Hello? You talking to me? Affirmative. My name is Colonel Alan Harris, 5th Battalion. I'm Jesse Fox. Rank? I'm not military, Colonel. Then tell me, Fox, what the hell are you doing here? I've been jailed for a crime I didn't commit. Do you know how to get out of here? Try to escape through any sewer. There must be one nearby. 'Cause it stinks when it's hot. Once outside, move along at nighttime and sleep during the day. What about you, Colonel? I've been tortured. My legs won't make it. But if you bring me a radio, I can help you escape. Hold on, Harris. Are you sure you heard him say Alan Harris? Yes, sir. Saw him yesterday. Look, Mr. Fox, Colonel Harris died a month ago in an ambush. Well, it's the name that stubborn old man gave me. I see. I'll write down on the report that you talked to Colonel Harris after his death. Continue your story. As I was saying, I searched for a radio to bring him. अगर आपको ये गेम बहुत ही पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बोलिए कमेंट सेक्शन में, मुझे इंटरेक्ट कीजिए कि अगर आपको ये डेमो खेलना है तो कैसे खेल सकते हो। मैं लिंक इसको डाल दूंगा आपके लिए। सो मुझे अभी 2 मिशन मिला है। पहला चीज़ तो मुझे एक सीवर ढूंढना है जो मुझे अभी मिलेगा इस बॉक्स को तोड़ के, एंड सेकेंडली मुझे फोन ढूंढना है तो मैं तो ढूंढूंगा अभी। A sewer hole. There was no ladder and I couldn't see the bottom. I needed to find a ladder or rope if I wanted to go down. सो अभी मैं देख रहा हूँ कि क्या करना है आगे। तो मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा इसका डैमेज क्या होता है। ये डैमेज किया मैंने। तो आपको क्या करना होता है कि आपको जल्दी से कैसे भी करके जो आपका हेल्थ है, आप HP देख रहे हो वो कम होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये पेपर लेना है, टॉयलेट पेपर। मैंने गलती से दूसरा ले लिया, तो ये टॉयलेट पेपर लेके आपको ये ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो अभी देखिए मेरे पास अभी हेल्थ एकदम नहीं है, तो मैं ऐसे ही खेलूंगा अभी फिलहाल। तो मैं देख रहा हूँ कि एनिमी नीचे जा रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ उसको जाते हुए। तो मैं अभी उसको मार दूंगा। मैं बच गया एक्चुअली। अगर मैं हो सके तो मैं अभी मर जाता। I picked up the guard's radio. Without encryption, I knew other guards could listen in on my conversations with Harris. I see. You still haven't told me how you got that news. I'll tell you later. As I was saying, I needed to find a special encryption circuit to install in the radio.
I took a coin off the guard. Money? What'd you intend to spend it on? I suspect there's no shops open for an escapee on a midnight run. Who said anything about spending? I used it to distract soldiers. I quickly found out that guards love picking up free coins off the ground. I had the circuit. I just had to attach it to the radio. With the modified radio, I could speak to Harris with no one listening. Now, I just had to bring it to him. And the noose? Later. So मुझे लगता है कि न्यूज़ लेके ये क्या करेगा, तो मेरे को तो लगता है कि वो फांसी दे देगा इसको न्यूज़ लेके। इसको न्यूज़ की इतनी पड़ी है, बट मैं अभी ये शायद फ़ोन दे दूंगा कर्नल को फ़ोन चाहिए, एंड मुझे रोप और एक हुक चाहिए होगा शायद। Here you are, Colonel. A radio. I've modified it to encrypt the signal. Oh, good job, son. Do you have another one for you? Not yet. I'll call you through Channel 1 as soon as I find another. Good luck, son. And Godspeed. तो मेरा हेल्थ अभी भी लो है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, मुझे हेल्थ किट भी नहीं मिल रहा है अभी। सो मैं इसको मार के शायद कुछ मिल जाए इन सारे बॉक्सेस में। अगर कोई हेल्थ किट मिल जाए मुझे, मैं देख रहा हूँ अभी शायद इस बंदे के पास होगा एक हेल्थ किट। नहीं मिला मुझे। फिलहाल मैं आगे जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत ही लो है। मैं एक शॉट पे मैं मर भी सकता हूँ। ठीक है, अगर हो सके तो मैं कर दूंगा। ये हुई ना बात। You stole a one-eyed man's patch? A one-eyed man that would shoot me without hesitation. Because it was his job. What you did was macabre and suggest you might have a fetish. Holy Jesus. Well, that patch turned out to be handy to create a lethal weapon. So मुझे लग रहा था कि अगर ये गेम हिंदी में डब होता तो कैसा होता। You removed his glass eye too? Yes, I took it out of his eye socket to chill out. To chill out? Pulling out glass eyes relaxes you? I'm not a sadist. I didn't enjoy pulling it out, but it helped when I rolled it around in my mouth like candy. I was under a lot of pressure, too much stress, and I'd end up making a mistake. Hey, buddy, I have no paper. Can you bring me some? Here you are. Thanks, man. You saved my ass, literally. What the fuck? What sort of paper is this? It's only one ply, unscented, and unpatterned. It's the kind the prisoners use. Fuck, that's why their hands stink so much. By the way, who are you? I don't recognize your voice. I'm Lieutenant Marcus Stevenson. Lieutenant, you say? Sir, I apologize for my manners. I did not know your rank, sir. Relax and clean up your rear guard well. Sir, yes, sir.
मैं यहाँ पे देख रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होता है अगर मैं पंच करूँ तो यहाँ पे दरवाज़ा में कोई क्वेस्ट अगर साइड क्वेस्ट देता है कि नहीं है। बट फिलहाल तो कोई साइड क्वेस्ट तो नहीं दे रहा मुझे। अभी फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कहाँ जाना है, शायद ऊपर, हाँ ऊपर जाना है। अब इसको मारना है तो मैं हाइड करूँगा पहले। हाँ तो ये ने मैंने थोड़ा स्टाइल से मारा उसको, लाइक उसके सामने डॉज करके। ये थोड़ा तो स्टाइल बनता ही है। I ran into a guard as I went in. Luckily, the guy was sleeping. That bastard was going to have a rude awakening. The lethal weapon you created with the patch was a slingshot? Sort of childish, don't you think? What were you going to shoot? Pebbles? Depleted uranium balls. 3 shots and goodbye, guard. और मुझे मिला एक एम्प्टी पॉटी। मुझे पता नहीं है इसका काम क्या होगा, शायद अच्छा ही होगा इन फ्यूचर, हेल्प हो जाएगा मेरा खुद का। अब मैं आगे जा रहा हूँ एंड इसको मारने की मैं कोशिश करूँगा। मैं ऐसे हाइड करके, ये सामने आएगा मेरे सामने तभी जाके इसको मारूंगा। ये साइड पे जा रहा है तो मैं साइड में जाके इसको मार देता। कॉम्बो बहुत अच्छा है, लाइक 3 शॉट ही कॉम्बो है। लाइक अगर आप Xbox कंट्रोलर है आपके पास तो X से होता है ये। अभी मैं अच्छा इसको सिगरेट चाहिए तो ये सिगरेट मांग रहा है मेरे से। मेरे पास जो नहीं है With लाइटर those मिला। first aid kits, I could disinfect and heal my wounds. Good news, those kits stopped any bleeding and also healed my wounds over time. Bad news, once you used them, they were gone. तो मैं अभी हील कर लूँगा अपने आप को। मैं आगे जाऊँगा अभी यहाँ पे इसको मारने के लिए। शायद इस बॉक्स में भी मुझे एक हेल्थ किट मिल जाए। अच्छा उसको सुनाई दिया मेरा आवाज़। इसको अभी वेट करूँगा मैं यहाँ पे, इसको आने के लिए कोशिश करूँगा और ये मार देगा मैं। एंड मुझे वो मेडल भी चाहिए। अच्छा मुझे सिगरेट मिल गया। टॉयलेट्स चैलेंज अनलॉक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक, मैं देख रहा था कि लाइक अगर एवरी विंडो कोई दूसरा डायलॉग देता है कि नहीं। तो नीचे 3 एनिमी है मुझे दिख रहा है मैप पे। वो 3 डॉट्स जो दिख रहा है वो एनिमी है। फिलहाल मैं ये रूम पे जाऊंगा। इस बंदे से शायद मैं बात कर लूं, कुछ बोल देगा मुझे। Hey, bro, help me. Get me out of this hole. If you're in a cell, it's because you committed a crime. And I don't free criminals. But you're a prisoner too. I've been imprisoned for a crime I didn't commit. Fuck you. Hey, friend, I'm also innocent. That's what they all say. Please, they keep the key in that box. तो मैंने उसको नहीं छोड़ा है, मुझे नहीं पता उसको छोड़ने से कुछ होगा कि नहीं। अगर आपको देखना है ये चीज़ तो आप खुद लाइक आप स्टीम पे ये डाउनलोड कर सकते हो। ये गेम डेमो अवेलेबल है एंड देख सकते हो इसके साथ क्या होता है अगर आप कीज देते हो इसको। तो मैं अभी हाइड करके इसको मार दूंगा। तो अभी वहाँ पे मुझे 2 बंदे दिख रहे हैं, मुझे थोड़ा टफ लग रहा है। अभी मेरा लेवल अप हो गया
एंड मैं अभी देख रहा हूँ कि क्या लेना है। मैं स्टील फिस्ट ही लूँगा क्योंकि ये कॉम्पोज बढ़ा देगा मेरा। Hey, Mike, can you tell them again? Of course. The Sarge says to the soldier. तो मैं सोच रहा हूँ मैं कॉइन फेंकूँ इसके सामने, Someone sent क्या you a बोलता blank है? letter. The soldier says, "Hey, a coin. You're not going to pick it up, right?" Yeah, why not? Come on, Mike. It's the oldest trick ever. As soon as you crouch down, smack! Smack what? The owner will show up and kick your ass. The Sarge says to the soldier, "Someone sent escaping prisoner." तो वहाँ पे मुझे एक वो मिल गया, एक नया हेल्थ किट जो मैं ले लूँगा। और ये मैं मार दिया, नाइस, मैंने दोनों को मार दिया अभी। सनग्लास, वाओ, इसने मुझे कॉइन दे दिया एक। शायद वो कॉइन उसने उठा लिया था इसीलिए मुझे कॉइन दे दिया फिर से वापस। ये वही कॉइन है। फर्स्ट एड किट और ये रोप मुझे मिल गया। अब मुझे एक हुक चाहिए जो कि मेरा मिशन है। मैं फिर से ट्राई करूँगा अगर ये कुछ और बोलता है। बी क्वाइट, ओके, बी क्वाइट एक अलग चीज़ जिसने बोला अभी। हाँ, और ये क्या बोलता है देखता हूँ। स्टॉप इट। तो दो ही I reached डायलॉग a है। special place where I found something. What, Mr. Fox? It was... what was it? Damn, I can't remember. Oh, yeah, now I remember. It was that damn grenade guy. I wanted to punch the hell out of him, but I couldn't reach him. Why couldn't you reach him? There was a ditch. A simple ditch stopped you? This was no mere simple ditch. It was full of tentacles and blood-stained spears that moved up and down, and bony arms that tried to grab me, and deadly lays. Okay, Mr. Fox. I get it. You couldn't reach him. For your own good, I'll not include the spears, arms, and tentacles in my report. Now, Mr. Fox, please continue your story. All right. The fight began as he tossed the first grenade at me. अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, जो मैं अभी कर रहा हूँ बॉस फाइट में। Boss defeated. With the radio encrypted, I could talk to Harris. I wouldn't have been able to escape without his help. I hate to admit it, but the grumpy old man gave some good advice. Colonel, do you copy? Copy. I found a rope to go down the sewer. And you're not down yet? What the hell are you waiting for? I'm on it, Colonel. सो मैंने थोड़ा वहाँ पे एडिट कर दिया था जहाँ पे बॉस फाइट करता हुआ था, बिकॉज मैं चाहता नहीं था कि ये 25 मिनट्स और 30 मिनट्स से ऊपर हो। सॉरी, नॉट 25 मिनट्स बट 30 मिनट्स से ऊपर ना हो, तो मैंने थोड़ा एडिट कर दिया। कुछ ज़्यादा नहीं था वहाँ पे, कुछ लाइक बैक ही आना था और इस बंदे से फ़ोन लेना था। एक लास्ट जो बंदा था उसको मार के मैंने फ़ोन ले लिया एंड नाउ आई एम गोइंग बैक एंड वो स्टोर से मैं शायद एस्केप हो जाऊं। एंड सो अभी मैं पहले सिलेक्ट करूंगा रोप को। पहले मैं रोप को सिलेक्ट करके अभी मैं I couldn't see the bottom of that hole, but I anchored the तो दोस्तों rope आपको ये and गेम went कैसा down. लगा एंड अगर आपको ये गेम अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे। एंड अगर आपको ये गेम खेलना है तो प्लीज़ आप खेल सकते हो
ये स्टीम पे अवेलेबल है अभी, एंड मुझे नहीं पता ये गेम कब रिलीज़ होगा या इसका अभी तक डेट मुझे नहीं पता, बट अगर आप जाके विश लिस्ट में डालते हो तो ये बहुत ही हेल्प करता है गेम डेवलपर्स को। सो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोग को हेल्प करें और ये गेम बहुत जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो एंड आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया गेम है। थैंक यू गाइज फॉर कमिंग इन टू माई चैनल, और होप आपका दिन शुभ रहे एंड सेफ रहिए और सबको सेफ रखिए, मास्क पहनिए। थैंक यू गाइज अगेन।